So again, I Anjum Nirban welcomes you to join the class of English grammar. Student, as you all know, yesterday in our previous class we have read conditional sentence type 1 and conditional sentence type 2. Today it's time to do conditional sentence type 3. So without further delay, let's get started. There is a form. In other way, we can say the formula of conditional sentence type 3 is if plus past perfect. Now in first we read present and second we read past tense. Now we'll read about past perfect tense with the main clause and conditional too. Okay, what were the condition two over there? Would. Okay, what will apply over there? Would. Now here we'll apply would have. Okay, because it is perfect tense. So the example, if I had found her address, if I had found is past perfect tense. Had is a past perfect helping verb and found is the third form of find. Okay. I would have sent her an invitation. मैं क्या भेज देता उसको एक invitation भेज देता. So I would have because there is past perfect. That's why I will apply it. Would plus have plus verb's third form. Okay. Would have plus verb third form. Over here sent will become sent because sent is a third form of sent. If I had not studied, I had not studied. Studied is the third form of study. I would not have passed my exam. The rule, according to the rule, would have plus third form. Passed is the third form of pass. Okay, everyone? I hope this is clear to you all. And there's a rule. The main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. Will not apply comma when there is main clause in the first or in the beginning of the sentence. Okay. For example, I would have sent her an invitation if I had found her address. Now you can see over here there is a main clause in the beginning and then the subordinate clause. Okay. So in that case, will not apply comma. Condition. How to use it? Conditional sentence type 3 refer to situation in the past. It is telling us the situation in the past. An action could have happened in the past if a certain condition had been fulfilled. Things were different then, however, we just imagine what would have happened if that situation had been fulfilled. यानी हमें सोचना होता है और हम उसको उसी टाइम पर करने की कोशिश करते हैं. For example, there is a situation sometime in the past, कभी कभी past में I wanted to send an invitation to a friend. मैं क्या सोचता हूँ कभी कभी कि मैं क्या सोचता था कि मैं क्या चाहता था कि मेरे फ्रेंड को इन्विटेशन भेजूं. I don't find her एड्रेस, लेकिन मुझे कभी उसका एड्रेस नहीं मिलता. हाउएवर, सो इन द एंड जब भी आखिर की बात आती, आई डिडंट सेंड हर एन इनविटेशन. यानी फंक्शन हो जाता था लेकिन मैं उसे इनविटेशन नहीं भेजता था क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मिला. अभी तक भी एड्रेस नहीं मिला है. ओके, इसलिए मैं उसे भेजता भी नहीं था. तो इन दैट केस व्हाट विल राइट, इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, अगर मुझे उनका एड्रेस मिल जाता, आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन, तो मैं उन्हें इन्विटेशन भी भेज देता. ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन ओवर हियर, आई न्यू जॉन वेरी वेल. मैं जॉन को अच्छे से जानता हूँ, सॉरी जानता था. न्यू हियर, दिस इज द सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म. एंड आई नो दैट, मैं जानता हूँ, ही नेवर हैड मच मनी, और उसके पास कभी इतना पैसा नहीं था. बट ही लव फरारीज, लेकिन उसे क्या पसंद थी? फरारीज पसंद थी. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस. ओके, He would have loved to own a Ferrari, और उसे क्या पसंद था कि उसके पास खुद के पास एक फरारी हो. बट ही नेवर हैड द मनी टू बाय इट, बट कभी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे खरीद सकता था. ओके, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल अप्लाई? Third sentence, third condition sentence, which is if John had the money. Here had two time repeated because one had is on possession. एक हैड किसके लिए यूज किया गया? पोजीशन के साथ, कि बिलोंगिंग के लिए हैड यूज किया. एंड सेकंड हैड इज द आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ हैव. Okay, the money, he would have bought a Ferrari. Would plus have plus third form. Bought is the third form of buy. So I hope this conditional sentence type 3 is clear to you all. So there we have already read type number 1, type number 2, and this is time we are reading type number 3. I'm repeating the formula of type number 3, which is if plus past perfect tense. Okay,
with main clause and condition number 2. And what were our condition? Would. Okay, and here we have perfect tense, so that we will apply have plus verb third form in the second sentence. Okay everyone, so let's do activity. Before doing activity, there's some another situation which we are going to cover up. एक्सेप्शंस यानी कुछ अलग से फॉर कंडीशनल सेंटेंस, कुछ अलग जो रूल्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, वो हम यहाँ पढ़ेंगे. सो फार यू हैव ओनली लर्न द बेसिक रूल्स. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, we have learned only basic rules. There are three kinds of rules. There are basic rules for conditional sentence. It depends on the context, however, which tense to use. Okay, what we read situation, we read tenses, about the tenses कि कौन सा tenses कहाँ use हो रहा है. So sometimes it is possible, for example, that in an if clause, किसमें एग्जाम्पल देने का पॉसिबल होता है? इफ क्लॉज में. टाइप 1 टेक्स अनदर टेंस देन सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट तो होता है लेकिन टाइप 1 क्या होता है? अनदर टेंस टेक करता है, जैसे कि विल. सिंपल प्रेजेंट के साथ हमने कौन सा टेंस यूज किया था? विल यूज किया था. एंड अगर हम और भी एग्जाम्पल यूज करें तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर कंडीशन रेफर टू, यानी कंडीशन कहाँ होती है? फ्यूचर एक्शन के लिए होती है, एक्शन गोइंग ऑन मींस कंटिन्यूअस के लिए होती है, एंड फिनिश्ड एक्शन यानी परफेक्ट के लिए होती है. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं. एंड देयर इज एन एग्जांपल वी हैव, इफ द बुक इज इंटरेस्टिंग. If the book is interesting, there are three kind of condition in main clause. that अगर future के बारे में है तो हम क्या लिखेंगे? If the book is interesting, I will buy it. Okay, and we will apply over here comma. Okay, and अगर imperative की बात करनी है यानी किसी को suggestion देना है हमें, तो what will write? If the book is interesting, buy it. इसे खरीद लो. Okay, and if we're talking about modal auxiliary, okay, modal, what is modal auxiliary? It is a kind of helping verb. Okay, so modals में आपको पता है, हम आप already read कर चुके हो. Can, could, shall, should, may, might, all these are modal auxiliary. Okay, अगर modal auxiliary वाली situation हो तो हम कैसे apply करेंगे? If the book is interesting, you can buy it. There is can. Okay, can is a modal. नेक्स्ट इज इफ एक्शन गोइंग ऑन, अगर एक्शन चल रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो द एग्जांपल लाइक दिस, इफ ही इज स्नोरिंग आई विल वेक हिम अप. अगर वो स्नोर कर रहा है तो मैं उसको बाद में उठा दूंगा. आई विल वेक हिम अप. इफ देयर इज कमांड और देयर इज अ रिक्वेस्ट, तो इफ ही इज स्नोरिंग वेक हिम अप, उसे उठा दो. अगर वो स्नोरिंग कर रहा है तो उसे उठा दो. अगर हम टॉक करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? इफ ही इज स्नोरिंग यू कैन वेक हिम अप. आप उसे उठा सकते हो. अगर वो स्नोरिंग कर रहा है तो आप उसे उठा सकते हो. तो हम प्रेजेंट टेंस को इन तीन चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, इन तीन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं. कौन कौन सी तीन चीजें? फ्यूचर, imperative in which we give command, order, okay, and last one is modal auxiliary. Next is, if we are talking about present perfect tense, the finished action where we have completed our work. So here, if he has moved into his new flat, now in future condition how will apply? We will visit him. अगर वो अपने new flat में जा चुका है, move कर चुका है, तो हम क्या करेंगे? उसके घर जाएंगे, visit him. अगर इम्पेरेटिव हो, किसी को ऑर्डर दिया हो या किसी से रिक्वेस्ट की हो या किसी को कमांड दी हो, तो हम कैसे करेंगे? इफ ही हैज मूव्ड इनटू हिज न्यू फ्लैट, विजिट हिम, कॉमा, विजिट हिम. ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडल, अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑक्सिलरी, इफ ही हैज मूव्ड इनटू हिज न्यू फ्लैट, वी कैन विजिट हिम. ओके, now we are talking about conditional sentence type 2, impossibility. okay, यानी type 2 में हमने क्या पढ़ा था? past tense के बारे में पढ़ा था. now here you can see that improbable action, अगर ऐसा action जो improbable है उसमें हम क्या यूज करेंगे? should plus infinitive. now here you can see, if she should win this race, अब फ्यूचर में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इफ शी शुड विन दिस रेस, वी विल कॉन्ग्रेचुलेट हर. यानी इफ के साथ अगर शुड कभी आ जाता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, विल अप्लाई ओनली विल वाला, जो भी विल वाला जो होता है फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे. ओके, देन आप देखिए, इफ शी शुड विन दिस रेस, इंपेरेटिव अगर होगा तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेट हर, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी होगा तो विल राइट ओवर देयर वी कैन कॉन्ग्रेचुलेट हर. ओके,
Now if we are talking about simple present में he she के साथ हम s और es मिलेगा हमें, और अगर plural form होगी तो हमें s और es नहीं मिलेगा verb के साथ. So देखिए, if he gets what he wants. Now here we already recognize that this is simple present tense, क्योंकि यहाँ पर he she के साथ हमेशा क्या आता है, s और es आता है, और he और she क्या है यहाँ पर singular form में है. If he gets what he wants, अब इसको हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे शो करेंगे, he is very nice. ओके, नेक्स्ट इज इफ क्लोज के साथ देखिए, प्रेजेंट फ्यूचर इवेंट, या तो प्रेजेंट का इवेंट हो या फिर फ्यूचर का इवेंट हो, एंड सिंपल पास्ट के बारे में है तो देखिए, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, कंडीशन 1 क्या होगी, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. अगेन दिस इज द सिचुएशन ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस. I had, मेरे पास अगर मनी होता, सिंपल पास, तो what will apply over here instead of would, will हम क्या अप्लाई करेंगे, would अप्लाई करेंगे. I would travel around the world. अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कहाँ ट्रेवल करता, around the world. अगेन देखिए, if I knew him, अगर मैं उसे जानता, I would have said hello. मैं उसे क्या बोल देता, hello बोल देता. तो this is very easy, you have already read about it. Next is देखिए, प्रेजेंट की पास्ट परफेक्ट में देखिए, अगर हम बात करते हैं, कंडीशन रेफर टू प्रेजेंट एंड पास्ट, और यहाँ पर हमारे पास इफ क्लोज किस में है, पास्ट परफेक्ट में है. इफ आई हैड नोन इट, एंड कंडीशन क्या होगी, 1 अप्लाई होगी, क्योंकि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वाले बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आई वुड नॉट बी हियर नाउ. ओके, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा, इफ ही हैड लर्न फॉर द टेस्ट, कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम. सो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ही वुड नॉट हैव फेल्ड इट. कंडीशन 2 में हमारे पास वुड के साथ क्या था, हैव था. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एवरीवन, एंड देयर इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू द conditional sentence. So let's do the activity. Identify the type of conditional used in the following sentence. As you remember, students, yesterday I have asked you same questions, so I hope this is easy to do. If he had the time, he would do it. If he had, this is the past tense and the past condition number 2. That's why we apply over here condition number 2. So we'll write only, we need to write over here number 2, number 1, number 3. Okay. You will catch the flight if you reach on time. This is main clause in the first sentence and then subordinate clause in the second sentence. And if you reach, this is the simple present, and in simple present we have first sentence, condition sentence. Okay, I would have brought a gift for her if she had been nice to me. I would have brought, automatically we are getting it because there is would have plus third form. That's why I'll apply here third condition. Okay, if you tell him the truth, he will forgive you. First condition. If I had learned swimming, I would have been able to save him. Would have been, third condition. Okay. If you went near it, it would kill you. This is second condition because went is the past form and second form. She will buy a new car if she has enough money. She will buy a new car if she has enough money. She has means it is talking about first present tense. Okay, तो हम क्या apply करेंगे, first condition. What will you do if I take your book? आप क्या करोगे अगर मैं आपकी बुक ले लेता हूँ तो? It is also a present tense. So we'll apply over here first condition. If he had the time, he would certainly complete the work. If he had, उसके पास time होता तो he would certainly complete the work. It is past tense. So we'll apply second condition. Okay. If you did not follow the instruction, you would be punished. If you did not is also a second form and it is talking about past tense. So we'll apply over here second condition. If you had explained means perfect tense, verb plus third form. Okay, so we'll apply third condition. Would the party be spoiled if he sang? He sang. This is the second form, past tense. Okay, and for the past tense we apply over here would. So this is second condition. Your appointment would be cancelled if you did not reach on time. Did not is the second form and automatically we are getting with the would, and this is past tense, so we'll apply second condition.
I would have attended the classes if I had not been sleeping. I would have attended. This is third condition because there is a rule would plus have plus verbs third form. Okay. And last one is shall we win if the team works hard. So team works here is the form of simple tense. Okay, simple present tense. So we'll apply here first condition. Now student, there is a clue with us. क्लू क्या मिलेगा आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो जहां भी सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो वो फर्स्ट ही कंडीशन होगी। और हम हमेशा सिंपल पास्ट के साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं, सेकंड टेंस। ओके, जहां भी सिंपल पास्ट आ जाए वो कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड कंडीशन होगी। एंड हमेशा परफेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। जहां भी आपको परफेक्ट टेंस दिखाई दे जाए, थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, मीन्स वो थर्ड कंडीशन है। ओके, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Now we have another activity related to this. Write a suitable form of verb in bracket in the blank provided. If you dash his dress, he would not go to the party. Now here we have to recognize that there is would, and we cannot apply don't iron because would always use in past tense. So we'll apply over here did not iron instead of don't iron. हम क्या अप्लाई कर देंगे, did not iron. The do की past form क्या हो गई, did. Okay. Does it become difficult to breathe if there is smog in the air? Okay, here we have does already. It is present tense. So be की first form क्या होगी, is. ओके, बी की फॉर्म्स फैमिली क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। और प्रेजेंट में अगर हम बी को यूज करेंगे तो इज यूज करेंगे। ओके, if we dash visit Akshardham, we would not have been able to admire its beauty and architect. Now from here we will get to know that would not have been means would have plus third form. B की third form क्या है, been है. So here automatically we apply third form. Okay, had not visited. Okay. Next is if you dash a lot of sweets this Diwali, you might suffer a stomach infection. तुम्हें क्या हो सकता है, stomach infection हो सकता था. Might is the second form of may. Okay, may का अगर हम पास्ट की बात करें तो वो क्या होता है, might होता है. एंड हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी में might है मींस पास्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, ate. ओके, eat का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, ate. Next is we dash burst crackers this Diwali, we will be again polluting the environment. यहाँ if नहीं लिखा है, if we burst is the first form और why applied over here first form because there is will condition और will condition किसके साथ आती है, हमेशा present के साथ आती है. If the driver dash noticed the falling launcher, he would have saved his life. Would have saved. Now automatically we will apply over here perfect tense. Okay, had noticed. Would she have scored good marks if she had done her work properly? Would she have scored? Yani she have scored here, it is talking about condition number 3. In condition 3, what were our rule? Past perfect. And in past perfect, what we have to apply? Apply had plus verbs third form. Okay. If we dash our surrounding with we are welcoming flies and mosquitoes. Here this is the fact. Okay, and in this condition what will apply, only first form. Okay, so litter, if we litter our surrounding, हमारे surrounding को कूड़े कचरे से भरकर रखेंगे, we are welcoming flies and mosquitoes. और हम ही किसको welcome कर रहे हैं, मक्खियों को और मच्छरों को. Okay, next is if he dash don't color the picture, it would not be displayed in the exhibition. Again this is would displayed means it is second form. Okay, हम second form के बारे में बात कर रहे हैं, past के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, past में don't किस में change हो जाएगा, did में change हो जाएगा. Did not color. As you know that अगर did आ जाएगा तो हम verb के साथ कोई भी form apply नहीं कर सकते. If I promise him a treat, he will finish my work. Now this is automatically we are getting that this is condition number 1 because here will, so we'll apply it as simple present tense.
Next is Mary would have swept the living room if Jack had moved the furniture. Now here would have swept, yani would have plus verb third form. Now automatically will apply over here past perfect tense. Okay. Unless he dash sell more, he won't get much commission. Now student, unless is another condition of sentence, conditional sentence. Over here we'll write over here sells. Okay, and he won't means will not, so will apply sells because he के साथ हमेशा s और yes आता है. I would not have known what to write in the form unless you had helped me. Same rule है unless का भी. Would have known, it is would have plus verb third form. That's why we'll apply over here according the rule according to past past perfect tense. Okay, next is your essay will not win a prize unless you dash some interesting and anecdotes. Okay, तो यहाँ पर क्या है बेटा, will use हो रहा है तो will apply simple present tense. Okay, will you help me if I ask you, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो यहाँ पर simple conditional number 1 है और for the condition 1 will apply always simple present tense, so will apply over here ask. Okay, so I hope this session is clear to you all. The conditional sentence, whole the book exercise, and with the rules, I think all things are clear to you all. Please do practice at your home also for your better understanding. Okay, everyone. And in our next class, we'll be continuing with the next chapter, next topic. Till then, bye bye, everyone.